round will be played between Ashu 11 and winners of this last match of the first round. So let's play the match. Meanwhile, requesting extra player of both the teams kindly come and join the scorer. Extra player of both the teams kindly come and accompany the scorer, as many individual prizes are to be given. And if we are not getting the names of your players, then your players will not be given the individual prize even if he deserves. That is the strict warning by the organizers. Jai with the ball, and batsman's name are yet to come to the scorer. MS cricketers to field. Jai to start the bowling. First delivery has been hit for a 6 by the unknown name. There's a sixer from the unknown player. I am also feeling it very bad not to take the names of the batsmen, as the names are not provided. Second ball wanted to pull, unable to connect by the left-handed batsman. Takes a single, takes the total to 7. Now the right-handed batsman on the strike. Jai to continue, as the right-handed batsman is on the striking end, decides to come over the stumps. I beg pardon, Jai again delivers left arm round the stumps as the right-handed batsman was on the strike. Right-handed batsman back to the pavilion without troubling the scorer. Left-handed batsman still on the striking end, and Jai strikes, takes a wicket at the score of 7. So meanwhile, names are not yet provided. Left-handed batsman on the striking end. And let's see who is the new incoming batsman. I think a name is written on the back of the jersey. Irfan on the striking end. Chandrasekhar at the non-striker's end. Meanwhile, Jai continues, lovely strike from Irfan. Chance of a catch, tall guy under the ball, won't miss. And the second wicket goes down in the first over. Lovely over so far bowled by Jai. 2 wickets down. Irfan back to the pavilion. Chandrasekhar on the striking end. Jai takes the second wicket. Score is at 7 for the loss of 2 wickets. Sriyog, the new man in at the non-striker's end. Meanwhile, plays the ball towards the square leg area for a single. Chandrasekhar opens his account with a single to bring Sriyog on the striking end. Single taking the total to 8. 8 for the loss of 2 wickets. Jai still continuing. Left arm around the stumps. Man on strike. Sriyog. Let's see what the Sriyog is about to do. Short pitch delivery. And that is the easy thing for Sriyog. Pulls the ball out of the square leg. That's a biggie. Sixer taking the total to 14. And that concludes over number 1. After the completion of 1 over, score is 14 for the loss of 2 wickets. Chandan about to deliver the second over of the inning. Man on strike, Chandresh.
Check. Finally, the power returns back and we are onto the roll. Second in progress, score is 18. Big guy Suyog is on the striking end. And Chandan is still continuing the second over. Left and round the stumps again played, 2 recovers. Meanwhile, a single taking the total to 19. Full toss delivery, chance of a catch, a fielder won't miss. And that's a wonderful catch taken. And that's the completion of the second over. So after completion of second over, score is 19 for the loss of 3 wickets. Satish to bowl the third over. Akshay, the new man in, but will be at the non-striker's end. Satish doing the final warm-up before he could deliver, flexing his muscles. Right up round, pace delivery, equally well hit, the chance of a catch, but field away from the fielder. Meanwhile, a single for Suyog to bring Akshay on the striking end. Single taking the total to 20. So we are requesting Kumpeshwar Bhargav and Avadam boys to kindly come and take the toss. As you are playing the following match, and the first match of the second round. Meanwhile, we have to wait for umpire signal as ball has been pitched slightly outside the off stump but inside the guideline. That makes umpire to declare it as a legal delivery. Dot ball bowled by Satish. Right arm round to continue the third over. Lovely pitch delivery has been executed towards the square leg. A straight batted shot guided the ball towards the square leg for a single to bring Suyog on the striking end. Suyog so far has hit a sixer. Let's see what we can do now. Satish bowling a deceptive line and length. And that's a handsome hit, but chance of a catch taken comfortably at the long on area. Suyog departs. Third over in progress. Suyog departs at the score of 21. 21 for the loss of 4 wickets. Still third over in progress. Satish gaining the confidence after taking the wicket of Suyog. So let's see who is the next batsman. A tall guy at the striking end. Plays the ball watchfully towards the covers for a single to bring Akshay on the striking end. Jagdish, the new man in, takes a single rotating strike. Akshay on the striking end. Right arm round the stumps, Satish to continue. Again a good delivery. Slide from over the keepers, there was a chance of run out, and yes, it is run out at the striker's end. Jagdish back to the pavilion in form of run out, and that concludes the third over after completion of 3. Score is 22 for the loss of 5 wickets.
Pratik, the new man in at the non-striker's end. Mahesh to continue. Delivers a wide delivery. Most probably not yet signaled, but it looked to be a wide, and yes, it is. Confirmation from the umpire to add a single in form of extra. Score moves to 24. As the left-handed batsmen have been at the striker's end, fielders moving from one place to the other to get the proper areas. Short pitch delivery again down the leg stump. Wide, consecutive second wide, bowled by Mahesh. Normally this team plays with the heavy tennis ball and now finding it difficult. But although a good effort by the bowling team, another wide stretch of arms confirms. Third consecutive wide, hat-trick of wides bowled by Mahesh. Finally decides to bowl round the stumps. Right arm round, Mahesh to deliver. A decent delivery after consecutive three wides. Bowls a dot ball. Jagdish shuffling slightly towards the off stump, trying his very best but not getting the proper connection. Again shuffles. Ball takes onto the legs. Throw was at the striker's end, but shy at the stumps. Allows Akshay to retain the striking end. With that single, score moves to 27. Akshay back to the pavilion. Meanwhile, Pratik is at non-striker's end. Jagdish was back to the pavilion. And the new man will be at the striker's end. Yunus, the new man in at the striker's end. Let's see what he can do for his team. Whether he can score some runs, trying to take the team out of the crisis, or Mahesh bowls the perfect line and length. Short pitch delivery. There's a connection away from the fielder. Meanwhile, a single to bring Pratik on the striking end. Mahesh the bowler, right arm round the stumps. Pratik on the striking end. Another good pacey delivery straight into the hands of keeper. Ball kept little low as it is skidding through the surface. Score is at 28. Meanwhile, cuts the ball towards the point area for a single. With that single, score moves to 29, and that's the end of the first inning. So after completion of first inning, score is 29. Target is of 30 runs, and as the night progresses, we have seen matches where a score is little at the lower side. 30 runs to get, and it's time for me to take the leave, inviting the team of the commentators, Krishna Devji, to kindly come and give your expert comments as the second inning will be on. So further details will be given by Krishna Devji and his co-partner Jay Bosley as the tournament progress. I am taking a leave, handing over the proceedings to Krishna Devji.
नमस्कार, 29 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच को जीत से पीछे। 30 रन की। अनिल स्ट्राइक पर। प्रीतम ये जोड़ी मैदान पर। एमएस क्रिकेटर्स गेंदबाज का नाम बताइए। बल्लेबाजी करे एमएस क्रिकेटर्स इस मैदान पर। 30 रन की आवश्यकता मैच को जीत से पीछे। बढ़िया शॉट कवर पर 1 रन के लिए खाता खोला गया मैदान पर। इस 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची 1 पर। गेंदबाज का नाम विठोबा नहीं पता हमें, बताइए। ओह, लॉन्ग ऑफ पर विठोबा जा पर फील्ड करते हुए 1 के साथ 2 पर पहुंचा टीम का टोटल। इरफान गेंदबाजी के मोर्चे पर इस मैच में टीम का कुल स्कोर 2 पर पहुंच चुका है। 28 रन अभी भी जीत से पीछे। ऑन साइड पर मिड विकेट के ऊपर से फुल टॉस गेंद 6 रन के लिए। वापस खेल, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट मिड विकेट और शायद सही है। देखिए, ये कभी कभी ये नहीं पता चलता कि बाद में सिर पर हाथ क्यों लगाते खिलाड़ी। आपकी गलती थी तो पता था आपको, बाद में सिर पर हाथ क्यों लगाया ये कुछ मुझे नहीं पता। आपने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया, मदद इतनी की ना कि गेंद टहलते टहलते निकली सीमा रेखा से बाहर, और बाद में भाई हाथ अपने सर पर लगा दिया। बाल नोचने के अंदाज में थे मुझे तो लगा कुछ पल के लिए। ये होता है बहुत बार क्रिकेट में, और ऐसे मोमेंट चाहिए जो मजा दे जाए इस प्रतियोगिता के लिए भी। ओ, बल्ले पर ठोसने लगी, 1 रन मिलेगा। पंद्रह पर पहुंचा टीम का टोटल। 2 छक्कों की वजह से इस मैच में अभी भी 15 रन की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। और खिलाड़ी देखिए अभी भी वही याद कर रहे होंगे कि भाई हाथ से किस तरह से गेंद छूटी और किस तरह से गेंद बाहर निकली। सब कुछ तो आंखों के सामने हो गया भाई, सब कुछ आंखों के सामने, उसके बाद भी कुछ नहीं कर सका। और शॉर्ट गेंद कवर बाउंड्री पर 1 रन के लिए। सोलह पर पहुंचा, 1 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल 14 रन की आवश्यकता मैदान पर जीत से पीछे। एक खूबसूरत माहौल के साथ मैदान में खेल चल रहा है, बहुत उम्दा मुकाबला। वो चाहने वालों की गर्दी, आज दर्शक काफी मात्रा में। आज का तीसरा दिन, 4 दिन ये प्रतियोगिता चलेगी, और उस हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतरीन माहौल मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली, सामने से विठोबा मैदान पर। ओह, शॉट गेंद ऑन साइड पर जगह बनाने का प्रयास किया। ऑन साइड पर मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़कर निकला। और इस इक्के दुक्के के साथ स्कोर बोर्ड पर तब्दीली मैदान में। बल्ले पर लगी है, फिर नो बॉल का इशारा, मतलब रन मिलेंगे वहां पर। 2 बॉल पर फ्री हिट और 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ। 30 रनों का सवाल, उसके जवाब में टीम का कुल स्कोर मैदान में पहुंच चुका, जबकि 18 पर फ्री हिट का माहौल मैदान में। वैसे तो इस वक्त मैं कहूंगा तो भाई मंदी जरूर है, क्योंकि रन आपके पास बहुत कम है। उसमें से आपने एक अतिरिक्त फ्री हिट का मौका दिया सामने से खिलाड़ियों को। ओ, फुल टॉस एंड शॉट में उतनी ताकत नहीं है। ऑन साइड पर स्कोर लेग सीमा रेखा से खिलाड़ी बाहर, मतलब करीब से उठा पाते 1 रन के लिए। अब 11 रन आवश्यकता जीत से पीछे।
इस बार बेहतरीन टाइमिंग, स्कोर लेग के ऊपर से, स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। हाथ खोलने का जो मौका दिया आपने, उस मौके को उन्होंने समेटा और क्या शॉट लगाते हुए 25 से 5 रन जिससे पीछे। प्रीतम के बल्ले से निकलता हुआ छक्का मैदान में। और फिर से ऑन साइड पर अब 4 रन जिससे पीछे। एक तरफा मुकाबला मैदान पर, जिस तरह से शुरुआत में ठोस बल्लेबाजी देखने को मिली है और दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की। प्रीतम एक छक्का, अनिल 2 छक्के, एक और रन निकलता हुआ। अब 3 रन जिससे पीछे मैदान में। इस गेम पर छक्का मारे तो मैच समाप्त हो जाएगा। और छक्के के साथ मैच समाप्त मैदान पर। मैन ऑफ द मैच का दावेदार कौन बनेगा?